Hello friends, welcome to my channel. So in this video I am going to discuss about the term acceleration. ठीक है? So acceleration basically होता क्या है? So the definition is that यहाँ पे जो definition है वो है the rate of change of velocity of an object with time called the acceleration. It means जो velocity जो change हो रहा है time के साथ उसको हम लोग acceleration बोलते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे टर्म आ रहा है वेलोसिटी. ठीक है, सो हम एक्सेलरेशन को भी ऐसे डायरेक्शन दे सकते हैं बिकॉज इट इज द वेलोसिटी. सो वी नो वेलोसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट पर टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट मतलब उसका डायरेक्शन हो रहा है. सो वेलोसिटी का भी डायरेक्शन होता है. सो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है तो एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन होगा. सो द डेफिनेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कॉल्ड एक्सेलरेशन. तो वेलोसिटी का जो चेंज रेट चेंज हो रहा है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं. उसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सीजीएस यूनिट है मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्योंकि व्हाट इज द यूनिट फॉर चेंज इन वेलोसिटी? मीटर पर सेकंड. ठीक है, सो मीटर पर सेकंड और है ऑलरेडी और यहाँ पे और एक टाइम मतलब सेकंड. सो मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट हो रहा है. एंड द डेफिनेशन इज चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम. So same as by that we already discussed velocity, speed. Here also uniform acceleration. Uniform acceleration. So यहाँ पे इतना ज़्यादा हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी सेम जो हम लोगों ने डिस्कस कर चुका हो. वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी वो सेम ही टर्म है. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स equal velocity with equal time interval. अगर सेम इट मींस इक्वल वेलोसिटी अगर इक्वल टाइम इंटरवल में हम लोग कवर कर सकते हैं तो वी कैन से दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. सो इक्वल वेलोसिटी विथ इक्वल टाइम इंटरवल. सपोज सेम एग्जांपल जैसे मुझे 1 से 2 किलोमीटर में जाने में मुझे अगर मेरा वेलोसिटी अगर 5 किलोमीटर पर सेकंड रहता है देन मेरा नेक्स्ट 1 किलोमीटर में भी मुझे सेम ही होना पड़ेगा. सो इट मींस इक्वल वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल अगर होता है देन वी कैन से दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. देन नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म acceleration. The same thing is that unequal velocity with equal interval of time. So I can write different velocity with equal interval of time. So यहाँ पे अगर मेरा different velocity हो रहा है with equal interval of time then we can say this is the non-uniform acceleration. And the next term is that average acceleration. So already we know that the formula is total velocity by total time. So the total velocity by total time we can say this is the average velocity. So यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं और एक टर्म एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू t2 minus v1 t2 minus t1. Okay, so suppose v1 and v2 are the velocity and T1 and T2 are the time. So अगर suppose यहाँ पे V1 and V2 अगर velocity हो रहा है and T1 and T2 are the time then we can write average velocity equal to V2 minus V1 divided by T2 minus T1. उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं delta V by delta T. Average velocity equal to delta V by delta T. Because this is the difference of this point. ठीक है. So what is the formula for average velocity? Is
total velocity by total time. अगर यहाँ पे मेरा v1 and v2 are the two velocity and t1 and t2 are the time, then we can write v2 minus v1 and t2 minus t1. Also we can write delta v by delta t. Okay, so this is the formula for average velocity. Now the next term is that instantaneous acceleration. So same thing, instantaneous acceleration means at that particular instant what is my acceleration. It is same like as our instantaneous speed and the instantaneous velocity. So in that case we can say this is the acceleration limit delta t tends to 0. So what is the formula is delta v by delta t, we can write dv by dt. So this is the formula for instantaneous acceleration. So I think you understood what is the, यहाँ पे मैं वेक्टर सिंबल दे देता हूँ, ये सिंबल दे देता हूँ because the acceleration has some particular direction. So I think you understood what is uniform acceleration, non-uniform acceleration, average acceleration. Uniform acceleration means it has equal time, the equal velocity with equal interval of time. Non-uniform means different velocity with equal interval of time, and the average acceleration means the total velocity by total time. अगर यहाँ पे मेरा v1 v2 अगर दो वेलोसिटी है and t1 and t2 मेरा दो टाइम है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. And the instantaneous velocity we can write a equal to limit delta t tends to 0 equal to delta v by delta t, because change in velocity by change in time. So हम लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है. So this is the formula for instantaneous acceleration. अच्छा, यहाँ पे और एक चीज हम कर सकते हैं. We know that velocity का फॉर्मूला क्या है? dx by dt. That we already will discuss in the last lecture. So velocity is dx by dt. तो अगर मैं ये इस टर्म को यहाँ पे लिख देता हूँ, so what is acceleration equal to d by dt. v मैं यहाँ पे dx by dt लिख सकता हूँ. ये जो v का टर्म है मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया. ठीक है, ये v का टर्म मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया. So ultimately we are getting d square x by dt square. So also we can write the acceleration is equal to a dv by dt or also dx square by dt square. So d square x by dt square. So this is the formula for acceleration also. ठीक है. So I think you understood what is acceleration. Acceleration means the change in velocity per time, and इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसके भी जो डिफरेंट टर्म्स है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन and the average acceleration, and this is the instantaneous acceleration. So a equal to delta t tends to 0 dv by dt. Why it tends to 0? Because it gives that instant of time. अगर यहाँ पे मैंने 0 कर दिया तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है. ठीक है, बट यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन होगा delta t tends to 0. And we can also write this equal to this term. ठीक है. Now one more point is that in case of acceleration there is positive acceleration and the negative acceleration. So what is positive acceleration? Positive acceleration means if we apply some force, because in case of acceleration we need some force. Okay, if the acceleration is increases, okay, and its velocity is also increases, then we can say this is the positive acceleration. It means if the velocity increases with the increasing acceleration, we can say this is the positive acceleration. And then another term is negative acceleration. Negative acceleration means with the increasing acceleration, if my change in velocity is decreases, then we can say this is the negative acceleration. और also we can say this is the retardation. Okay, negative acceleration को हम लोग retardation भी बोल सकते हैं. Positive acceleration मतलब क्या है? जब हम उसमें कोई चीज को हम एक्सेलरेट कर रहे हैं,
ठीक है, वो एक्सेलरेट के साथ उसका अगर वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रहा है तो हम उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। इट इज जस्ट लाइक कार बाइक के अंदर जहां पे हम लोग उसको एक्सेलरेट करने के बाद क्या होता है, उसका स्पीड, उसका जो वेलोसिटी वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, सो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस जब मैं किसी कोई भी चीज को एक्सेलरेट कर रहा हूं, देन उसका अगर वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, देन वी कैन से दिस इज द पॉजिटिव एक्सेलरेशन। बट व्हेन आई अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स, जैसे मैं यहाँ पे एक्सेलरेट कर रहा हूं बट उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, देन वी कैन से दिस इज द नेगेटिव एक्सेलरेशन। और उसको हम लोग और एक टर्म से भी उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। ठीक है, तो इसका अगर ये डायरेक्शन में होगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। So if the velocity decreases with the increasing acceleration, we can say this is the retardation. So I think you understood what is acceleration, what is uniform, non-uniform and average acceleration, what is instantaneous acceleration and what is positive and negative acceleration. So अगर कोई भी डाउट है तो आप हमको मुझे कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू गेट द मोर अपडेट्स। थैंक यू।